Today's our topic is trigonometry, class 10th standard. We are going to see how the trigonometric problems are there in the CBSE and how easily we can go. जाएगा इजी रहेगा आपके जो भी कंफ्यूजन होंगे वो हम कंफ्यूजन क्लियर करें देन विल गो तब तक कुछ और स्टूडेंट है जो ऐड होने वाले हैं रिजल्ट्स विद द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री है इससे आपके सारे लेंथ मेजर होंगे बिना मैन्युअली है बट स्टूडेंट्स दे टेक इट इट्स अ न्यू टॉपिक फॉर यू तो लिटिल उनको डिफिकल्ट जाता है so let's first understand the right angle triangle which we have done in the lower class okay so now right angle triangle we have three sides first understand right angle triangle is the triangle in which at one angle is 90 degree 90 degree angle hota hai right then we have here the opposite side which is opposite hypotenuse कहते हैं जो भी ACAB hypotenuse कहते हैं जो भी ACAB या perpendicular ACAB या perpendicular तो आपको ये तीन साइड्स हैं जिसके ऊपर पूरा आपको ये तीन साइड्स हैं जिसके ऊपर पूरा आपका ट्रिग्नोमेट्री का गेम चलने वाला है ये आपको ध्यान रखना है इसका ओके ओके hypotenuse this is your perpendicular this is your perpendicular which is and this is the base ये आपको perpendicular which is and this is the base ये आपको कोई भी क्वेश्चन हो कोई ट्विस्टेड को ये तीन साइड्स के बारे में सोचना है ये कैसे को ये तीन साइड्स के बारे में सोचना है ये कैसे आएगी ओके और इसमें हमें ये दो एंगल रहेंगे ये दो एंगल्स के ऊपर हमें काम करना है तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री में आप इसके ऊपर हमें काम करना है तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये पांच काम करना है तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये पांच hypotenuse base and these two angles angle A and angle C right angle पे so let's understand now right angle पे so let's understand now now here we are going to have the ratios of trigonometry right there are six ratios यहाँ पे six ratios हैं जो हमारे इस यहाँ पे सिक्स रेशियोज हैं जो हमारे इस ट्रिग्नोमेट्री में यूज होने वाले हैं नाउ रेशियोज मींस आई होप एवरीवन नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियोज मींस आपका एनीथिंग व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ रेशियोज मींस आपका एनीथिंग व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p upon a which is equal to p is to q this is your ratio right this is your ratio right this is p is to q तो इसे हम रेशियो कहते हैं तो यहाँ पे छह रेशियोज है हमारे पास which we are going to work on so first is sin right now है कि इसमें हम कौन सा एंगल ले रहे हैं आपको है कि इसमें हम कौन सा एंगल ले रहे हैं आपको छह रेशियोज हैं बट वो किसी एंगल से रिलेटेड होंगे now in this case right now I'm going for the angle C this called theta right now this example what called theta right now this example what I'm taking right now it is related with the angle C यहाँ पे देखो मैंने लिखा है adjacent of C adjacent मतलब जो C के पास में है ये साइड this is AB this is opposite of angle C
AB इज ऑपोजिट ऑफ एंगल सी एंड AC तो फिक्स है हमारा हाइपोटेनस जो 90 डिग्री के ऑपोजिट में। तो हमें यहाँ पे सपोज इफ आई एम टेकिंग एंगल ए, यहाँ पे अगर मैं एंगल ए लेता हूँ तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, AB हो जाएगा। एंगल ए लेता हूँ तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करते समय जल्दबाजी में हम हमारी यहाँ पे गलती हो सकती है, तो ऑलवेज टेक केयर दैट आपका एंगल कौन सा है और उसका ऑपोजिट और उसका एडजेसेंट कौन सा रहेगा। ओके, so now here I am taking sin C. ओके, sin C रेशियो क्या होता है, इट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। sin C क्या होगा आपका, साइन रेशियो कैसा है आपका, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AC हो सकता है, राइट। नेक्स्ट रेशियो वी हैव हियर दैट इज cos, ओके, एडजेसेंट अपॉन, थोड़ा सा भी नया चीज है मेरे लिए, राइटिंग विद द टैब, so please bear me for this, adjacent upon hypotenuse, ओके। तो एडजेसेंट हमारे यहाँ क्या पे है, कौन सा है आपका एडजेसेंट सी के लिए, विच इज BC। नेक्स्ट इज योर tan C। Now tan, this is the third ratio which we have here, that is tan C. Now in the tan, it is up upon adjacent, C upon cos C, ये sin C upon C इन दोनों का रेशियो, sin C upon C इन दोनों का रेशियो, sin upon cos, that is also known as the tan ratio. So this, if you calculate the sin C हमारा देखो क्या है, AB upon AC, and when we are dividing it by BC and AC, so AC BC will get cancelled and we will get AB C, AB upon BC we will get, ओके। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है tan C आपका रेशियो क्या है, AB upon BC। Please you remember in this way also that it is sin C upon cos C. Please that it is sin C upon cos C. These are the three ratios. Again, next more ratios are there. That is next ratio we have here, cosec, cosec C, right? Cosec C, right? Now cosec is nothing but it is the ratio of reciprocal of sine, 1 upon, okay, 1 upon sine C, up, okay, 1 upon sine C. Now cosec C is nothing but 1 upon sine C, आपका जो reciprocal है sine का, बट हमें मालूम है साइन क्या है, साइन क्या है, साइन इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, राइट। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस का रेसिप्रोकल हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन opposite, and we will get here AC upon AB, right? So these are the four ratios till now we have one, okay, and the next ratio is there, that is sec, and sec is nothing but the sec is reciprocal of, and make some space for myself, sec is the ratio of reciprocal of cos, that is here 1 upon cos, that is here 1 upon cos, right, this 1 upon cos C, and cos क्या है हमारा, hypotenuse upon adjacent upon hypotenuse upon adjacent, right, and we will get the ratio in this triangle, that is AC upon
We have gone ahead. Just a minute. Give me a minute. यहाँ पे थोड़ा हमारा चले गया था. I'll just write it again. So, good hand. Okay, I'll write it again fastly. It will be difficult for you also. So we have first ratio, that is sin C is equal to opposite upon hypotenuse AB upon AC. Then we have cos ratio, that is cos C, that is adjacent upon hypotenuse BC upon AC. Then we have seen next, it is tan ratio. Tan C is nothing but the ratio of sine upon cos ratio, and it gives this opposite upon hypotenuse upon adjacent upon hypotenuse. So here hypotenuse will get cancelled and will get here opposite upon adjacent. So our in this triangle we have tan ratio as AB upon BC. Next we have cosec ratio, that is cosec C. In this case it is reciprocal of 1 upon sine ratio with sine C. Okay, and the sine is hypotenuse and reciprocal. उसका reciprocal क्या होगा? Hypotenuse upon opposite. So we will get that AC upon AB. Next ratio we have sec ratio, that is reciprocal of cos. Okay, उसका और reciprocal किसका है? वो cos का है. So here we will get cos. Cos का रेशियो हमारा है adjacent upon hypotenuse, उसका reciprocal होगा hypotenuse upon, that is nothing but AC upon BC. And the last ratio is that we have here is the cot ratio, and cot is equal of tan, that tan is what? Opposite upon adjacent, और उसका reciprocal क्या होगा? Opposite. Okay, and in this triangle we will get BC upon AB. So these are the 6 ratios we have here. I'll just recall them again fast. 6 ratios we have here, and the 6 ratios are sine ratio, cos, tan, cosec, and sec. And this last is the cot one. These 6 ratios we have. Sine, again I'll tell that sine ratio is nothing but it is opposite upon hypotenuse. Then cos is the ratio that is adjacent upon hypotenuse. Tan you can write cos, और आप ऐसे भी सोचते हो opposite upon adjacent.
Then cosec is nothing but it is the ratio of reciprocal of sine, that is 1 upon sine you will get here. So that is opposite is there. Sec is nothing but it's the reciprocal of cos. So 1 upon cos हो गया और आपका इसका रेशियो आया आपका hypotenuse upon adjacent. In the same way we have cot. This is the sixth ratio and sixth cot ratio. Tan का reciprocal is your adjacent upon जैसे हमारे ये 6 रेशियो है, राइट. नाउ इन सब रेशियो के ऊपर we have some values. Okay, we are going to get the ratios over here. तो सबसे पहले चलो हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे आपका बनेगा. Now here I have got one question for you. If sin A is equal to 3 by 4, calculate cos A tan A. Right. Now let's take this triangle. One triangle is in front of you. इसको हम लेते हैं सपोज यहाँ पे I'll take here this is A, this is B, this is C. Okay. Now purposely I have taken A upside now क्योंकि हम यहाँ पे इसको भी इस एंगल A के हिसाब से देखें, राइट. You have understood all the ratios. अगर आपको समझ में आया है तो जस्ट yes कमेंट एंड आपके फ्रेंड्स को ये शेयर करो. लिंक शेयर करोगे तो ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फायदा होगा. ओके, तो शेयर विथ योर फ्रेंड्स दोज आर स्टिल नॉट जॉइन. Subscribe the channel so the next channels whatever videos will be coming it will be easy for you to access it. Okay, so this is my the first some technical issues were there. Okay. So let's go for this problem now. Here triangle is given, ABC triangle is given, and here my right angle is given. So now tell me this is ABC. Keep in mind now here sin A is given 3 by 4. So A is never 90 degree नहीं होगा. तो क्या होगा वो आपको आइदर ये दो जो ऐसी आदि एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से लेस है तो वो वहां पे आती होगी, राइट. तो नाउ हियर sin A is 3 by 4. तो आप लिख लेंगे पहले sin A इट इज इक्वल टू 3 by 4. अब साइन हमारा रेशियो कैसे होता है, साइन रेशियो हमारा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो साइन का दिस एंगल A इसका ऑपोजिट, हियर आई विल राइट 3 hypotenuse is 4. AC आपका hypotenuse है, BC according to the angle A it is opposite and AB according to the angle A is your adjacent. तो ये हमारा मिल गया. Now tell me I want to know the they have asked me to find cos A and tan A. तो cos A हमारा क्या रेशियो था, that is adjacent upon hypotenuse. तो मुझे adjacent मालूम होना चाहिए, so I should know this adjacent. Use here Pythagoras theorem. So what Pythagoras theorem say, that hypotenuse square is the square of the adjacent side. तो hypotenuse square हमारा यहाँ पे क्या है, ये AB square that is your adjacent side, BC square plus BC square that is your opposite side of angle A, and it is equal to the AC square that is your hypotenuse, right. हमें मालूम नहीं है तो I'll keep it as it is. AB square, then BC square. BC is what, 3. 3 square is equal to AC आपका 4 square, right. So now we have one variable in the equation. हमेशा याद रखो जब भी आपकी इक्वेशन में वन वेरिएबल है that time only you can get the value, otherwise आपको वैल्यू नहीं मिलेगा, right. There will be some conditions if two variables are there. Okay, so we'll go for this now. So I have now here AB square, 3 square is 9 and 4 square is 16. So in this way now I will get my AB square is equal to 16 minus 9. So 16 minus 9 is how much? 7.
So my here AB square I got 7, but I want what? AB. So it will be AB will root 7. Clear? AB will be equal to root 7. AB will be equal to root 7. Now here keep in mind, whenever we are finding the roots, we are getting the values in two, that is plus and minus 7. But in this case, minus 7 will not be applicable because this is the 9 segment. So minus 7 we can, so we will consider only root 7. Clear till here? Now I got the value of AB, that is root 7. So I will write here now root 7. Now I have been asked this is root 7. Okay, ratio of cos A and tan A. Okay, so let's do over there. So cos A. Now tell me what is the ratio of cos? Cos is nothing but the adjacent upon hypotenuse. So my adjacent here is nothing but here root 7. So I will write here root 7 root 7 upon hypotenuse is 4. Clear? Cos A is equal to root 7 upon 4. Next, I have been asked here tan A is equal to, tan is what? Tan is opposite upon adjacent. So opposite here is 1 and adjacent is here for the angle A is root 7. So in this way, I got my both the values cos and tan. Students, keep in mind you will have your questions in this way. There may be asked any ratio. Cot will be asked, sec will be asked, any ratio will be asked. Okay. So okay. So now here you have to understand how the sequence is there. Whenever we first in such questions, what we have to do? We have to do here first whatever we have been given, write them in the triangle. Write those values opposite, adjacent और hypotenuse, whatever is given आपको वो लिखना है पहले. उसके बाद आपको क्या करना है कि पाइथागोरस थ्योरम से आपको थर्ड साइड फाइंड करनी है, and then when you get the third side, then you go for the cos A and tan A. Clear? Now let's take, given here is what 15 cot A is equal to 8. Find sin A and sec A. Okay, so find sin. Just first draw the triangle. Okay, cot A is given. So right now I'll take here A. I'm changing the position of A again in the from the previous one. This is my hypotenuse. This now opposite will be what? This is the angle A is given here. So opposite of angle A will be BC. This will be opposite angle, right? And adjacent will be AB. I hope now you have clear. आपको समझ में आ रहा है कि opposite और adjacent में confuse नहीं होना है. जल्दबाजी में बच्चे wrong करते हैं. Clear? The values of this whatever is given. Now I know what is the cot ratio. Cot ratio क्या होता है? Cot is nothing but what is your opposite upon adjacent. ये आपका कौन सा है? tan का रेशियो है. और tan क्या होता है? Cot is opposite of that. So cot का ratio will be adjacent upon. To learn first main of the sin and cos. Sin and cos से आपके सारे values आपको मिल जाते हैं. Clear? Next, here now I have been given 15 8. Clear? 15 cot A is equal to 8. But 15 cot A, अब तक हमने ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं है. But cot A, I can write this as cot A is equal to 8 upon 15. Okay, 8 upon 15 is there. तो अभी रखना है कि जो भी वैल्यूज होगी उसको आपको रेशियो में लाना. अगर रेशियो में नहीं है, क्वेश्चन ट्विस्टेड दिया है तो उसको रेशियो में लेके आओ. ओके, यहाँ से यहाँ पे 15 इंटू कॉट ए, तो वी वुड बी इंटेंशन कि अगर 80 है, डिनोमिनेटर तो है ही नहीं है, तो 15 यहाँ से आपका डिनोमिनेटर में आ गया. क्लियर? नाउ कॉट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन 15. नाउ दिस
कॉट रेशियो क्या है हमारा, एडजेसेंट अपॉन, दिस इज योर एडजेसेंट, ओके, this is 8 and opposite is your, clear, this is 15. Now I want to find the value of AC. So AC, what we have here, Pythagoras theorem, AC square is equal to, AC square is equal to, AC square is upon AB square plus BC square. स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज गिव द मैसेज यस, तो मुझे समझ में आएगा, बिकॉज as we are going on the live, students the interaction is not there in front of me, only my this screen is there, and are you listening, understanding, मुझे नहीं समझ में, तो आपके कमेंट से मुझे समझ में आएगा, तो प्लीज लेट मी नो विथ योर कमेंट्स, if you are not understanding or if you are understanding, मुझे प्लीज कमेंट्स में मुझे भेजते रहो. Okay, now AC square I want to find. Here AC square is equal to, what is AB here, यहाँ पर AB क्या है 8, so I will write here 8 square plus BC क्या है 15, 15 square, right? So this AC square is equal to 8 का square, it is 64, plus 15 square is how much, think 15 square is, suppose आपको squares नहीं आता है, I'll tell you simple trick here, 5, okay, this is 15 here, okay, this is 15 here, so this 5 will be 25, and this 1, what comes after 1, 1 after 1 comes 2, so ये आपको 1 इसको multiply करो, 1 into 2 225, okay, so simply 15 square you get 225, आपको रफ में multiply करने की जरूरत भी नहीं है, square of unit place 5, okay, एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ, अगर now I have taken the topic, 25 square is there, so 5 square 25, 2 के बाद we get 3 and 2 3 are 6, so 25 square will be 6, get it, okay, okay, चलो यहाँ तक समझ में आया आपको. Now AC square is 64 plus 225, so now here we will have AC square is equal to 4 plus 5 is 9, 6 plus 2 is 8, and this is 2 as it is. So 289 is there. 289 square is there. So AC square is what? AC square is, we have 288. Now we want to find AC. So what is the root of 289? It is 17. Clear? यहाँ तक समझ में आया सबको? AC 17. Now we got the third side, and easily now we can get the, okay, so here now I have got 17, clear, up here roots or here, now here I have been asked sine A, so I will write sine here, sine A, what is sine, sine का रेशियो क्या है, opposite, right, opposite upon hypotenuse, so opposite यहाँ पे क्या है आपका, A का opposite is 15 and उसका hypotenuse is 17, sec A is equal to, sec A is what, 8 upon 7, okay, okay, 8 upon 17. Now